देशवासियों, आज हमारे देश के सामने चार मुख्य चुनौतियां हैं। थ्रेट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रॉम चाइना, इस्लामिक रेडिकल्स ऑफ पाकिस्तान, COVID-19 and our economic growth. In the ensuing night of June 15 and 16, as agreed by the military commanders of China and India, the Chinese were supposed to withdraw from LAC and the areas that they have illegally occupied. When the team of Bihar Regiment, comprising of Colonel S. Babu and his men, had gone to check the implementation of agreement reached between the military commanders the day before, their team was ambushed by Chinese by crude weapons. When the news reached the troops of the Bihar Regiment, they attacked ferociously and they massacred 43 Chinese. Out of that, 20 Indian troops lost their life and were martyred. कहने का मतलब ये है दोस्तों, China is acting like a regional bully. It is using the policy of salami slicing, which it uses in South China Sea against weak nations, smaller nations like Vietnam, Taiwan, Korea, Philippines, and it thinks that it can use the same tactics and policies against India. In South China Sea, they use a concept called 9 dash lines and कहते हैं कि पूरा South China Sea हमारा है और किसी का उसमें कोई हक नहीं. It doesn't care about the interest of the littoral nations and its neighbors. उनको ऐसा लगा कि इंडिया के साथ भी वो यही करेंगे. यहाँ पे आके हमारी टेरिटरी में well within LAC, knowingly they will capture it and then they will consolidate their position, erect their structures and ask us to withdraw, and they show their deeds in military might. इंडिया को किसी भी हालत में उनकी पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए. ऐसे बुली को तोड़ने का एक ही तरीका होता है, यू हिट फर्स्ट एंड यू हिट वेरी हार्ड दैट दे रजिस्टर इन देयर मेमोरी योर स्ट्रेंथ एंड दे शुड नॉट बी एबल टू रिकवर. हिट फर्स्ट, हिट हार्ड एंड कीप हिटिंग. दैट शुड बी योर. COVID-19 में जहाँ पे पूरी दुनिया ग्रस्त है, परेशान है, Pakistan has not stopped sending terrorists and their infiltrators continue to be killed by Indian army on the borders every day, every single day. They are actively supported by China materially. These intruders come with Chinese grenades, Chinese pistols. United Nations में भी China Pakistan का support करता है. They have active interest in disintegration of our country and occupying our territory, and we must not let them do it. We should be able to give them and hit them back hard, especially when they breach international agreement and kill our troops in the violation of that agreement. We must not let them sleep peacefully. We must give them a bloody nose. बहुत ज़रूरी है. ऐसे में कई सूडो इंटेलेक्चुअल्स बहुत ही गलत and wrong information spread कर रहे हैं कि हमारी बाउंड्री, हमारी टेरिटरी परसेप्चुअल है. इट इज़ नॉट फिक्स. हमारा एक परसेप्शन है, उनका अलग परसेप्शन. ऐसा बिल्कुल नहीं. हमारी टेरिटरी, हमारी बाउंड्री बिल्कुल हमें कन्फर्म्ड है. हमें मालूम है कि यही है हमारी टेरिटरी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस. चाइनीज़ की नहीं. देयर टेरिटरी इज़ वेरी वेग. They keep changing their territory once they salami slice and occupy a part of your territory and erect their structures, change facts on the ground. Then they say कि बात यहाँ से शुरू होगी, हमारी territory तो और आगे से है. हमें ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, especially when India has grown a military might considerably. अगर लड़ाई होती है तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए. We should be able to punch them back and give them a bloody nose. If required, open new fronts and fight in new dimension like air and sea, जिसको anticipate नहीं कर रहे हैं. And good time to do is now. कुछ समय के बाद मानसून आ जाएगा, followed by winters. If you are not able to remove them now, in those mountains, high mountains, their position will be consolidated, their claim will be consolidated, and that is what we don't have. We want them to be pushed back, and for that it is important that the citizens of the country come together and support government in every step, in whichever direction it takes. हमें अपनी टेरिटरी की सलामी स्लाइसिंग
इस स्टेज पे बिल्कुल अलाउ नहीं करनी चाहिए. वी विल सेट अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल एंड डीमोरलाइज आवर फ्यूचर जनरेशन फॉर एवर एंड आवर ट्रूप्स एंड सिटीजन्स फॉर एवर. वी मस्ट नॉट अलाउ दैट टू हैपन. हमें हार से डर नहीं लगना चाहिए, इवन इफ दे आर मिलिटरीली superior in numbers and strength, but we must pay them back. Only once we give them a bloody nose will they remember and they will not do it again. They will not consider कौन जीता कौन हारा. जब तक उनको ज़बरदस्त चोट नहीं पहुंचती तब तक वो ये चीज़ दोबारा, ये हिमाकत दोबारा करते रहेंगे. देशवासियों, हमें इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिज्म, चाइनीज़ कम्युनिज्म, their intelligence agencies, Pakistan radical Islam and their intelligence agencies have influenced considerable swathe on a large section of our society, who continue to act on their behalf. Various industrialists, politicians, lawyers, knowingly or unknowingly, are influenced by their agendas, and they're working knowingly or unknowingly for them, and they are causing considerable harm to our national interest. ऐसे लोगों को आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. चाइनीज़ की इस हमाकत को हमें किसी भी हालत में अनटच नहीं जाने देना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए. एंड इस मामले में देशवासियों, हमको एज ए टीम काम करना होगा एंड गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना होगा, चाहे इसके लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन ही लेना होगा. जय हिंद, जय भारत.